I watched it just yesterday. I want to just firstly get into the minds of how does one do this. I watched someone's real story. This had happened, and the minute I get into my car and just go back home, there's a lot of guilt in the way we live our lives. You who lives with the story makes the story, stays with it. All of us sitting in urban India, we talk about Aditya Log, Bichare. You see where they were born. How was their home like? Who were their family members? I've spoken about this before, but like I've sort of passed on as an upper caste Savarna person for 35 years of my life. What changes at what point, say in your life, you were like, okay, now I'm completely confident to talk about my past, my identity. It was a long journey, and actually, thanks to my friends, a lot of whom supported in like Varun Grover, Svetlana, Somain, all of my friends who pushed me to accept, and they said there's no shame. When I spoke about it on Twitter, it went viral, and a lot of media covered it, and I instantly felt that, what did I just do? And I went into a shell, and Bombay Times covered it on the front page. That made it even more difficult. ये फिल्म की क्या जर्नी रही है? आप लोग कैन गए, आप लोग टिफ गए, अभी ये ऑस्कर्स जाएगी. Beautiful. What was the first time? When was the first time it hit you all that individually, each one of you, ki, wow, this has worked wonderfully. Was it the 9-minute standing ovation? For me it was. For you it was yeah. that. Yeah. और कल जब ऑस्कर के बारे में पता चला, कहाँ थे आप? मैं एक टेस्ट पे था. हाँ. और मुझे कोई मैसेज करके बता रहा था, मैंने सीरियसली नहीं लिया. मैं चाहता था कि पहली बार मेरी मम्मी के साथ ही ये बात हो. Okay. और मैंने नीरज सर को कॉल किया, ईशान को कॉल किया, जानवी को कॉल किया, करण सर को कॉल किया, और मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा. अभी भी मुझे वो पता नहीं चल रहा है. अभी ऐसा है कि जिंदगी में एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लूं तो कोई गम नहीं है, क्योंकि टिफ, कैन, ऑस्कर और धर्मा फिल्म, यशराज में डेब्यू, अब इन सब के बाद मैं भगवान से मांगू क्या? मैं न्यूयॉर्क से वापस आ रहा था, हम टोरंटो में थे फिल्म के साथ. उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत घूम फिर के काम करके आया था वापस. इतनी खूब गाली दी कल, क्योंकि मैं पहली बार मुझे जिंदगी में इन्होंने गाली दी है. मैं कॉल कर रहा हूँ, he's not answering, and because I didn't realize he's on the flight, you can't call. You can only text, right? So I didn't realize तो मैं he's answering me, अच्छा what about this? अरे ऐसे कॉल नहीं हुआ. Guys, welcome to Bollywood Hangama. I want to congratulate you by first saying that, when a film like that goes from India as an official entry at the Academy, it feels like a personal victory for all of us. So big congratulations. Thank you so much. I watched it just yesterday. I want to just firstly get into the minds of, how does one do this. It's not an easy film to watch, Neeraj. When I watched this, I was just telling him that I watched someone's real story. This had happened. And the minute I get into my car and just go back home, there's a lot of guilt in the way we live our lives. I genuinely felt that. What is it for someone like you who lives with the story, makes the story, stays with it? I'm glad it resonated so personally with you. And honestly, that's also the way it started for me. Because when I read Basharat's piece, which he wrote for New York Times, of course it shook me, but also because I could relate a lot with it. But then also there are many thoughts that came to me to start Homebound. Starting from the point of wanting to humanize the statistics that we talk about. Right. Of marginalized identities. We are always quoting them in numbers. Yeah. Especially all of us sitting in urban India. We talk about Aditya Log, Bichare. You show hollow sympathy and you get away. True. Without any of us feeling any accountability for it. Right. And I thought that it's probably happening because we only speak of them in numbers. We don't know anything about them. And I thought, what if we humanize that and we pick two people out of that microcosm of people and then deep dive and go to their homes, see where they were born. How was their home like? Who were their family members? What did they eat? How was their joy like? What did they love? And how much they love biryani, or how were the dreams shattered? What made them migrate from one city to another, and then how did they make their way back home? So these were the questions of like how your friendship or your identity is sort of your home.
that you carry with everywhere. Yeah. So that was a quest to like get into that. Hmm. And also I have this thing that I have to make something. If I have to direct and write something, I have to make it personal. Hmm. So because there was Dalit character, so I poured a lot of me into it. Right. I've spoken about this before, but like have sort of passed on as an upper caste Savarna person for 35 years of my life. And even during Marsan, nobody knew, and even Varun Grover was my best friend, even he didn't know. And I was constantly afraid that what if people find out, they will withdraw their support and stuff. And so that shame that Chandan carries, that thing, all of that, and also I grew up in a very patriarchal Dalit household, Okay. and I was favored as a child, and I was ashamed as I grew up about it, and I wanted to put out all of that shame and bring some lived experience to it, So those were the thoughts that came in when we started constructing. When I started, of course, Sumit Roy helped me a lot in the story because it was like Bashal's story was like the end of it all, Right. but you had to weave an entire Story. around it. Like that there's a famous commercial where this very rich person walks into an architect's office and they say that she brings a faucet in her LV and she removes it and says, build a house around this. So it's like that. Right. Right. To both of you, the same question that, like if I felt like that, I'm just one viewer watching it. Y'all are the actors playing this, going back home, living, thinking about it. What is your process of switching on, switching off? Where does one cut off? You want to start? Yeah. So I think the first thing, like you said, I think anyone will relate to or feel with this is you become very aware of your own privileges. Yeah. And इस बात का श्रेय मैं नीरज भाई को देना चाहूँगा because I think that's something that is very important to him, and his social consciousness is much higher than the average person. Right. And I think it जिस तरह से वो लोगों को आमतौर पे ज़िंदगी में देखते हैं, उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस बहुत ही महीन हैं, and it's that kind of detailing that is in the script that humanizes these characters. Like he's been saying that I think the idea was कि जब भी हम ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं, हम नंबर्स में इन लोगों को नंबर्स में सीमित कर देते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो वो उनकी कहानी उनसे छीन लेता है. And the attempt was to just zoom in on these two people and humanize them and see कि हम में as an audience और उनमें क्या फ़र्क है और एक जैसा क्या है. And I think he was acutely aware of that throughout, So when we read it as actors, first thing, when I read it, I felt very, very moved by it, and I felt the responsibility of bringing this character to life, which he always told us that you're representing Shoaib and Chandan. Right. You're representing so many Shoaibs and Chandans that it's not enough to just be crafty. It's not enough to just give a great performance. जैसे विशाल पिछले इंटरव्यू में भी कह रहा था कि just to give an impressive performance was not the endeavor in this film. He said कि मैं वाकई चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप जी सकें इन कैरेक्टर्स को. And he did hold our hands and take us along that process. 3-4 महीने हमने prep किया इसके लिए. I think one of the most wonderful things we were lucky to do was we all took a trip together. UP गए थे हम, and रोज हम जाते थे किसी ना किसी गांव में, and we would sit with people, sit in their homes. They were very generous. They would allow us in कि आप आइए बैठिए हमारे साथ, खाना भी खिलाया हमें. So those are the things that I think made it much beyond a project for us. True. And that's why it shows, विशाल, आपको सेम सवाल, जब ये सब क्या क्या सवाल आते हैं मन में जब आप किसके घर जाते हो, देखते हो वो कैसे रह रहे हैं, जब आप एक हैवी ड्यूटी सीन करते हो, देन यू गो बैक होम, क्या क्या सवाल आते हैं मन में? तो
एक्चुअली स्विच ऑन स्विच ऑफ यहाँ पे तो आई थिंक हमारे लिए वर्क नहीं Possible करता था। नहीं। हाँ, तो हमें एक्चुअली किरदार में रहना था। जी, सर जी। को हमेशा ये था कि आप किरदार को जिएँ, आप किरदार के बारे में जानें, सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के, डायलॉग पढ़ के आपका परफॉर्मेंस सिर्फ एक ऊपरी तरीके से हो पाएगा। आप जब तक जिएँगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएँगे। तो हम एक्चुअली गाँव में जाते थे, जहाँ चंदन रहता है, मैं वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे खाना खाया है, हमने वहाँ पे स्क्रिप्ट पढ़ी है, सो दैट वी नो कि ये कैरेक्टर कहाँ रहता है, उसकी जर्नी क्या रही होगी। और सर की एक बहुत ही अच्छी ख़ासियत है, सर आपसे 5 मिनट बात करेंगे और आपको पूरी तरीके से समझ जाएँगे। मुझे अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में नहीं पता होगा, वो उन्हें पता चल जाता है और उसका सॉल्यूशन भी दे देते हैं वो। तो मेरे लिए ये एक्चुअली पूरा प्रोसेस ही प्यूरिफाइंग प्रोसेस रहा है, क्योंकि कोई भी आर्ट जब होता है, आप जब सीखते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप को जानने का एक प्रोसेस है। राइट। और हर एक किरदार आपको कुछ देता है और आपसे कुछ लेता है। आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है उसके बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए, जो बहुत ही मुश्किल है, बट आफ्टर अ पॉइंट यू रियलाइज कि यार ये बहुत ही ज़रूरी था। और वो शिफ्ट अगर मेरे अंदर आ पाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चंदन की एक जर्नी रही है अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने की, बहुत सारी चीज़ें, जैसे चंदन बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में करना चाहता है, वैसे ही मैं भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था और मुझे बहुत सारी चीज़ों के चैलेंजेस मिलते थे। आई डिडंट नो कि मैं क्यों रुका हूँ यहाँ पे, किस जगह पे मैं अटका हूँ। तो आई थिंक सर इज़ द वन हु हेल्प्ड मी। और आई थिंक एक और बहुत बड़ी बात, आप मुझे कह रहे हैं कि हमने कैसे परफॉर्म किया ये किरदार। मुझे आदित्य चोपड़ा सर ने एक बात कही थी फर्स्ट टाइम जब मैं उन्हें मिला था। सर ने मुझे कहा था सरेंडर योरसेल्फ टू द डायरेक्टर, और तब से आज तक मेरा एक ही फॉर्मूला है। पर हर डायरेक्टर को आप उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते, मन में छोटा चोर होता है। बट सर ने हमसे बहुत ज्यादा जर्नी जी है इन दोनों किरदार की। तो आज भले ही मैं पूरा कैरेक्टर शुरू से एंड तक मैं कर पाया हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कहीं गुना ज्यादा पर्टिकुलरली चंदन के बारे में भी कुछ पता हो तो वो सर को पता है। उन्होंने हमसे ज्यादा ये जिंदगी जी है। और इट इज नॉट ईजी एक ही स्टोरी के साथ इतने समय रहना। कभी कभी शायद, अगर मुझे पता नहीं है ऐसा ही होता होगा, एक बार अगर मैं सर के तरफ से देखूं, शायद कभी बोर भी होते होंगे, इंटरेस्ट भी शायद कभी कभार शायद लूज होता होगा, आई डोंट नो, ऐसा शायद होता होगा। बहुत सारे ऐसे फेलियर भी दिखे होंगे कि अब ऐसा लग रहा है कि यार छोड़, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलत हो गया है, नहीं बन पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी गिव अप ना करना और आज इस जगह पे बैठना कि हम अपनी फिल्म को ऑस्कर तक भी लेके जाए, इट्स अ वेरी बिग थिंग। It's a great thing, yeah. मैं ये रियलाइज कर रहा था तो आई थिंक बिना पूछे जवाब दे दिया। You are very excellent. In the first answer, you were talking about your personal journey as well. I want to ask you, at what point, what changes, at what point, say in your life, you were like, okay, now I'm completely confident to talk about my past, my identity. What changed? Does success change it? What is it? You know, ironically, success makes it even difficult. Okay. Because you're on the radar, in the public radar. Yeah. It becomes even more difficult to talk about it. But then, like I said, it was a long journey, and actually, thanks to my friends, a lot of whom supported in, like, Varun Grover, Svetlana, Somain, all of my friends who pushed me to accept, and they said there's no shame, and so I think that has been, I mean, it was quite a difficult phase for me, like when I spoke about it on Twitter, it went viral, and a lot of media covered it, and I instantly felt that, what did I just do? And I went into a shell, and Bombay Times covered it on the front page. That made it even more difficult. And I'll tell you the complexity of it. Like, a lot of my relatives were also sort of like not open about it. But because of me, and they used to talk about me with pride to everyone in their circle. So they also become inadvertently, you know what I mean? Oh my God. That, and then, like, a smallest example, like my help, who's been with me for 10 years, and she kept looking at the picture every day, like, it's like, आपका फोटो क्यों आ रहा है भैया, बताओ क्या हुआ. I couldn't tell her. I couldn't gather the courage. It took me 2 days, and I sat her down and I explained to her, and I was so afraid of her. Then she said, oh, आप जेबी वाले हो. Like, and then she said, आप तो इतना अच्छा हमारा देखभाल करते हो, and it would matter to us.
So those baby steps, every step, like at the same day, I actually called my driver upstairs and made chai for him. I had to break the news to him, and he said, "देखो भैया, हमारे घर में अभी भी होता है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको आपसे प्यार है और आप इतना अच्छा हमारा देखभाल करते हैं, तो हमको उस चीज़ से कोई दरकार नहीं है, हम कभी ऐसा नहीं सोचेंगे." Right. So, it is that complex. Right. No, it's beautiful the way you did it and the way you told them. Coming back to this story, when you read Basharat Peer's essay, it's so strong. What was what was it that you thought, I will not compromise on these things? See, that was my intent, because with the kind of passion and rigor with which Basharat wrote that story, I didn't want to manipulate it. Right. So that portion is not much changed, but yeah, you've dramatized a bit. Correct. So that you get the dramatic effect of the things, but that portion was like sacrosanct, right. And I didn't want to, but to build around those things, like to bring in these identities who are fuller. I mean, I met the people, right. like the Sayyub, I met him, but then to create something, like I couldn't deep dive much with them because he was not he was quite introverted, but then I had to create. So I may have met a lot of other people, like these boys also, when they went to villages, they could instantly see a lot of Shoaibs and Chandans. So जैसे ये लोग बात भी कर रहे थे ना, क्योंकि हम तीन भी और इस फिल्म से जो भी लोग जुड़े हैं ना, हम लोग सिर्फ एक जरिया, हम लोग एक वेसल हैं. जी. हम लोग ये हजारों चंदन और हजारों शोएब को इम्बाइब करें, तो हमारी इसलिए हम लोग, जैसे चंदन बताया, शोएब ये इतना मिक्स हो जाता है ना कैरेक्टर उसमें, तो जैसे विशाल कह रहा था ना कि हम लोग के लिए बहुत कैसे स्विच ऑफ करना, क्योंकि यही है कि जब आपके लिए एक हायर कॉन्शियस बन गया कि हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको आप बखूबी निभाएं और उनके लिव्ड एक्सपीरियंस को बहुत ही तरीके से करें, तब ये हम सबसे, हमारे फिल्म से भी बड़ी चीज़ बन जाती है. जब वो आ जाता है ना, तब आपको वो नहीं आता है कि बोर्डम, या आपको अंदर से आता है कि यार ये कुछ करना चाहिए. Guys, to both of you, जब पता चलता है, you're doing a Neeraj Khewan film, that's one of the big tick mark that all actors tell me. But when you hear कि ये एक real किसी पे based है, that adds something more to you when you're signing it, when you're working on it. No, I think for me it was मेरी इच्छा इनके साथ काम करने की 10 साल पहले से है, जब से मैंने पहली बार मसान देखी थी. लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये कि मैं कहानी से कनेक्ट कर पाऊँ. So I also give it great importance and precedence कि मैं पूरी सच्चाई से काम करूँ, जो भी करूँ मैं पूरी involvement के साथ करूँ. So it was actually only after reading the script that I knew that there is no turning back, no turning away. It completely consumed me. And I think इससे ज़्यादा खूबसूरत स्क्रिप्ट मैंने शायद ही पढ़ी होगी अपने करियर में अब तक. So yeah, I think the fact that it's a real story, and then he shared all those details thereafter with me, of course made it that much more critical and that much more important. But it also made it, I think the key word in this whole process, one can talk about many different facets of it, but for me, more and more I think about it, the key word for me is belief. Right. And I think I didn't have a doubt in my mind from the second I read the script. I think I believed it's very important for the actor to believe, for the audience to believe. Right. I think I just believed in it and I believed in him. And I believe in him. You believe, right. जब पता चलता है ये किसी की स्टोरी है, क्या वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर हमेशा रहता है सर पे, या रिप्रेजेंट करना है किसी को, उसकी फैमिली देख सकती है? आई थिंक एक सीरियसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, और आप इस चीज़ की, अगर आप एक अच्छे एक्टर हो, सीरियस एक्टर हो, तो आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो. और बट इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उस समय पे उतनी ही बात ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको अपना काम पे भी उतना ही ध्यान देना है जितनी की ये बात इम्पॉर्टेंट है. तो आई थिंक उसके बाद हम अपने प्रोसेस पे और बाकी सर के विजन पे ध्यान देते हैं. तो मेरे लिए इट इज़ दैट. ये भी नहीं कि वो जो जिम्मेदारी का जो एक एहसास है वो भारी हो जाए आपके. हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, फॉर अस इट वाज इम्पोर्टेंट कि हम इस फिल्म को और इस कहानी को एक भारीपन के साथ ना बयां करें. I think for us it was very important to make these characters alive. Yes, यही मेरा कहने की इच्छा यही थी. Exactly, इसने बराबर वर्ड्स में पुट किया. Right. इतने सारे इश्यूज टैकल करती है.
it was always meant to be a great film if a good filmmaker made it. How do you? I know you're not that person, but how do you avoid adding melodrama? Any kind of jingoism. It's so in a subject like this, it's so easy to add some narebazi, ek scene dal diya, and people will clap here. How do you stay away from that? They both have strategically turned towards me. Heads turned. Wait a minute. No. So one of the lessons that I've early drew from even Satyajit Ray or any of the filmmakers that I admire. From what? Sir? From Satyajit Ray. Cinema is a narrative medium, and of course you can do various art forms, but primarily storytelling. The intent should never be, because if your politics supersedes your narrative, however good intended you are, it is still a propaganda. Because so that has always been my penchant, that you have something to say, but it can't come barefaced and naked. It has to come in the garb of a good character and a good narrative and a good plot. Because fundamentally, I'm a filmmaker. I am not an activist. I'm a filmmaker. My entire gene is towards filmmaking. Right. So now I want to make these characters fuller, and see, like the same thing that we did, like we borrowed elements from the real people. Right. And we borrowed elements from various other people, so that it's a cosmos of something that's more interesting, that's And more complex. narrative, that makes a powerful narrative. So like the final climax may have happened elsewhere, but we chose to do it another spot because it adds to the drama. So I think once we have that thing, like we ought to realize that, because I'm not a documentarian, I'm a narrative filmmaker. So when I make documentary, I will deep dive into it. But when I'm making a narrative, my primary purpose is to engage through a cogent narrative. Right. And if I may add Sure, here, please. I feel कि इनकी जो टेक की जो खूबसूरती है, और शायद ही मैंने बाकी फिल्म मेकर्स में ये, बाकी नहीं कहूँगा बट औरों में ये बात ज़्यादा देखी हो, कि इट डजंट फील लाइक his social consciousness or his social voice doesn't feel like an argument. It feels like a conversation. It feels like, let me hold your hand and let's talk about it, and let me just show you another perspective. And the ball is in your court as an audience. मतलब बहस नहीं है यहाँ पर कोई भी, Right. कि हम सही हैं आप गलत हैं. Conversation. we want to उस pose तरीके का questions. नजरिया ही नहीं है इनका. We want to pose questions, we don't want to give you answers. Right. Because cumulatively all are trying to find the answers for it. Right. ये फिल्म की क्या जर्नी रही है? आप लोग कैन गए, आप लोग टिफ गए, अभी ये ऑस्कर्स जाएगी. Beautiful. What was the first time? When was the first time it hit you all that individually, each one of you, कि wow, this has worked wonderfully? Was it the 9-minute standing ovation? For me it was For you that, it was yeah. that. Yeah. और कल जब ऑस्कर के बारे में पता चला, कहाँ थे आप? मैं एक टेस्ट पे था, हाँ. और मुझे कोई मैसेज करके बता रहा था, मैंने सीरियसली नहीं लिया. मैं चाहता था कि पहली बार मेरी मम्मी के साथ ही ये बात हो. Okay. और मैंने नीरज सर को कॉल किया, ईशान को कॉल किया, जानवी को कॉल किया, करण सर को कॉल किया, और मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा, अभी भी मुझे वो पता नहीं चल रहा है. अभी ऐसा है कि जिंदगी में एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लूं तो कोई गम नहीं है, क्योंकि टिफ, कैन, ऑस्कर और धर्मा फिल्म, यशराज में डेब्यू, अब इन सब के बाद मैं भगवान से मांगू क्या? अब मतलब बहुत सालों से बोनस में जी रहा हूँ मैं. एक प्यारा फैक्ट मुझे कल रियलाइज हुआ कि जैसे आपके पास कोई खुशी की बात होती है ना, अगर आपके पास आसपास लोग नहीं है तो आपको वो खुशी फील ही नहीं होती. मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली से बात करने का मन किया, और अपने उन लोगों को साथ बात करने का मन किया जो इस जर्नी में साथ में थे. और मैंने सोचा, अगर समझ लीजिए ये कॉल्स ना होते और मैं बात नहीं करता तो क्या खुशी क्या होती? तो वो खुशी है ही नहीं, लोगों में ही है. ये मुझे कल ये फीलिंग इतनी ज्यादा हिट कर गई, आई फेल्ट लाइक शेयरिंग दिस विद यू. ये कितना बड़ा सच है, लोगों के बिना कुछ नहीं है. या बिल्कुल. एंड पीपल हु हैव ईशान के लिए ठीक उसका उल्टा हुआ था. कहाँ थे आप? हवा में उड़ रहा था. आप फ्लाइट में थे? हवा में. आप फ्लाइट में थे? जी हाँ. तो फ्लाइट पे वाईफाई होता है. मैं न्यूयॉर्क से वापस आ रहा था, हम टोरंटो में थे फिल्म के साथ. उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत घूम फिर के काम करके आया था वापस, और मैं फ्लाइट पे था और वाईफाई 1 घंटे भर के लिए चला गया था. और वापस जब आया तो सबके फोन कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि क्या मैं व्हाट पूछता जा रहा हूँ लोगों को, क्या लेट टू माय ओन पार्टी. लेकिन इतनी गाली दी कल
क्योंकि मैं पहली call कर बार मुझे जिंदगी में इन्होंने गाली दी है मैं कॉल कर रहा हूँ, he's not answering, and because I didn't realize he's on the flight, you can't call. You can't call, You can only yeah, text, only right? text, So I yeah. didn't realize तो मैं he's answering me, अच्छा what about this? अरे ऐसे call me your ass. Like, calling. Lastly, where were you? And what is the plan? What from here? I think when I got the news, I think Karan only told me. On the day. And because you know what else happened actually when Can ka selection ka news happened. Ji. I called Karan and he was like, Karan, are you sitting down? And like, Wow. yeah, Neeraj, tell me what so he happened. tried reverse That it's like I'm sorry, but like I had to tell you that we made it to the section and like Oh what my he starts God, screaming. yeah. Huge. Okay, so he returned the favor to me. He's like, "Ha, Neeraj, are you sitting down?" Ah. Okay, that's good. What fun, guys. सर डराते ज्यादा है सर, गुड न्यूज नहीं देते सर गुड न्यूज नहीं देते, सुन देख ऐसा ऐसा हो गया, जैसे मतलब बहुत गलत काम हो गया है अपने लाइफ में, या मुझे पहले तो डर लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है। तो अभी सब लोग सुन लो कि जब भी नीरज का फोन आया बोले आप बैठे हुए मींस कुछ जबरदस्त न्यूज़ आने वाली नहीं है। देख जश्न मनाना पड़ेगा, तैयार हो जा, बहुत काम है। Right. Guys, this is even in where it has reached is an achievement, and this I said it's a personal victory for all of us. Hope it goes places. Our next interview will be very soon. So can't wait Thank for you, that. sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Please watch the film 26th of September in cinemas. Yes.